and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, actually we have discussed the different topics related to the cell in our previous videos, and with related to that, whenever we study about the cell and its plasma membrane, its liquid, that is the plasma, that how could it flows, then we must have to also study about that how the movement of solvent or the solution takes place inside our body. So we must have to discuss the things that is diffusion, osmosis, for which knowing about the different topics, that is endosmosis and exosmosis. Being a topics, this is provided as a topic, this is in the biology, has provided a very little just to know about only the cell movement inside the body, but for knowing in brief, it is been explained, or it is the subject related to the chemistry, but we always study about the biochemistry also, so the some parts of the chemistries are also we involved in the biology. So without moving here and there, just let's start the topic, endosmosis and exosmosis. Actually guys, whenever we have to study about the endosmosis, exosmosis, before knowing all of these things, we must have to know about the diffusion and osmosis. Guys, do you know that what is the difference between the diffusion and osmosis? Diffusion is a simple process in which the movement of solution takes place from the higher concentration to the lower concentration. It doesn't mean any medium, it doesn't want any permeable membrane or anything. But during the process of osmosis, if osmosis happens, then the movement of the solution takes place through a semi-permeable membrane from the lower concentration to the higher concentration. What is the difference? I have said that in the diffusion, the movement of the solution takes place from the higher to the lower concentration, and while we are studying about the osmosis, the movement of the solution takes place, or the solvent takes place from the lower concentration to the higher concentration. So because these terms endosmosis and exosmosis contains osmosis inside this, so we will obviously know that it's a process of osmosis whenever we are talking about the endosmosis and exosmosis. Endo, it means simply this terms mean endo, it means inside. When the liquid is kept under a very, I can say what I'm saying, that whenever a cell, if a cell is kept under a very low concentration solution, then the movement of the solvent will take place through the semi-permeable membrane from outside to the inside. It means the concentration of the solvent which is lying outside the cell is less than the liquid or the plasma which is present inside the cell. So that it will it will create the swelling up of the cell, because the सॉल्वेंट या फिर जो भी हम लोगों ने घुलनशील पदार्थ डाले हैं, जो घोलने के लिए डाला है, वो घोलने वाली जो चीज होती है, मीडियम होती है, वो क्या होगा, बाहर जो है वो उसका कंसंट्रेशन बहुत लो है, और अंदर सेल के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, और हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करना है, उस लिक्विड को, वो जो सॉल्वेंट है हमारे बीकर में, उससे हमें सेल के अंदर डालना है. तो फिर क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का. सो क्या होगा, सेल जो होगा वो स्वेल अप हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है वो कंसंट्रेशन लो है, सारी मॉलिक्यूल्स जो वाटर की होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जाना स्टार्ट करेगी, और जैसे जैसे ही वो अंदर जाएगी सेल फूलना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंडोऑस्मोसिस. ओके, एंड नाउ द सेकेंड टर्म इज एक्सोऑस्मोसिस. एक्सो इट मीन्स आउटवर्ड. व्हेन, जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कम होगा, और बाहर बीकर में जो लिक्विड रखी हुई है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, फिर क्या होगी, सेल जो होगा वो अपना सॉल्वेंट रिड्यूस करना, यानी उसे लूज करना स्टार्ट करेगा, और ये लूज करने का मीडियम क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का, वो सेल के थ्रू होते हुए सॉल्यूशन, बीकर में जो रखे हुए सॉल्यूशन है वहां पहुंच जाता है, और लाइकवाइज दिस द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कंप्लीट्स. सो इसमें क्या होगा, एज अ फाइनल रिजल्ट वी विल सी व्हाट द सेल इज श्रिंक्ड. इट मीन्स उसमें थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा सेल, क्योंकि वो अपने अंदर से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है उसका, और उसके सेल्स जो है वो वाटर लूज कर रहे हैं. सो हम लोगों ने समझा एक्सोस्मोसिस क्या होती है, एंडोस्मोसिस क्या होती है. सेल चैप्टर में इन द in the syllabus of 9th you have to study about all these things. So guys, I think ये दोनों एग्जाम्पल्स देने के बाद मुझे लग रहा है कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस का जो
पूरा एक्सप्लेनेशन है और पूरा जो उसके अंडरस्टैंड करने की जो क्वालिटी है वो आपको समझ में आ रही होगी, बिकॉज ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ है समझना, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है. इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, बट इन द बायोलॉजी ऑल्सो whenever we are studying about our bodies or our body cells are always being shrinked in water, either water or in the blood. So it has to take nutrition from this, and this happens only due to the process of diffusion and or the osmosis. So guys, this is all about the today's video. Hope you all have liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with your friends, and subscribe my channel. And I also request from you all just to put a comment, that your comments are so much valuable for me. It guides me, it show me the path that from where I have to do the most lever just to prevent my just to enhance my qualities or inspired with you all. So guys, thank you so much, and also put me in the comment that which topic do you want to study, because if you are understanding the language in which I am sharing the topics with you, or if I'm saying whatever if you are getting it, then it will be very beneficial for you, and you can also share me for the topics, or you can demonstrate on which I have to demonstrate. Thank you guys, thank you so much.